हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और आज को हम लोग देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही मस्त टॉपिक है, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 BCE है, बिफोर कॉमन एरा। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रॉन्ज, जिसे ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। नेम्ड बाय जॉन मार्शल, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जॉन मार्शल है, वो है डायरेक्टर, क्या बोलते हो, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी ने हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखा था। इसका जो फर्स्ट चेयरमैन था कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है। ठीक है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1921 बाय दयाराम साहनी, वाइल मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय राखलदास बनर्जी। समझ रहे हो ना दोस्त? उसके बाद अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखते हैं यहाँ पर, तो नॉर्दर्न साइड में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। साउदर्न साइड में देमाबाद है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न में आपका आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वेस्टर्न साइड में सूद कांगेडोर है जो कि पाकिस्तान में है। द चोलिस्तान रिजाइन इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाज वंस ए थ्राइविंग पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चोलिस्तान रिजाइन अभी आप देख रहे हो वो पाकिस्तान में है, वो पहले इंडस वैली का बहुत ही अच्छा पार्ट हुआ करता था, थ्राइविंग पार्ट हुआ करता था। अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो जो मेजर क्रॉप्स था वो वीट एंड बार्ली था। कॉटन, लेंटिल, चिकपिया, सीसैम, मिलेट्स, राइस, गार्लिक, ये सब वहाँ का हुआ करता था। कॉटन का मतलब होता है वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड ग्रीक्स एक यूज नाम करता है सिंडस फॉर कॉटन। ठीक है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो पोलोड फील्ड फाउंड एट कालीबंगा, टू सेट्स ऑफ furrow were found at right angle, suggesting two different crops were grown together. Oxen were used for plowing and terracotta model of polo found in Cholistan and Banawali. अगर हम एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो कैटल लाइक सीप, गॉट, बुफेलो, पिग, बुल, ऑक्सन वेयर डोमेस्टिकेटेड. Bones of boar, gharial, deer, fish, and fowl was found, which indicate about their domestication. Not evidence of horse and cow are not found, and ये bone of horse was discovered from Sutkotka. अब टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस. ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर यूज्ड. वाटर रिजर्वेयर, धोलावीरा। अगर टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो सीटाडेल, जिसको एक्रोपोलिस कहते हैं, और लोअर टाउन, जो सिटाडेल होता है, स्मॉलर बट हायर टाउन, इट वाज वाल्ड फिजिकली सेपरेटेड एंड स्पेशल पब्लिक पर्पस. जो लोअर टाउन था, लार्ज बट लोअर टाउन, इट वाज आल्सो वाल्ड फोर्टिफाइड मींट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. नॉट धोलावीरा गुजरात वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. चंदुधड़ो पाकिस्तान had no citadel. Okay, the citadel within Lothal was not surrounded by a fortification but instead was built on raised mud brick platform. Citadel, fortification, and lower town there is pictured. And the Great Bath, 12 meter is length, 7 meter is breadth, and 2.4 meter is depth. Great Bath at Mohenjo-daro, it is rectangle shaped like tank-like structure which might have been used for ritual bathing. Gypsum based mortar has been used for waterproofing. Great Granary, it is the largest building in Mohenjo-daro. It was used for storage of grains. The Great Granary. Brick Granary of Harappa. 6 granaries in each row, 2 rows, total 12 granaries found in Harappa. Grid pattern, roads cut each other at 90-degree. Drainage system. Most distinctive feature of Harappa civilization: grid patterned roads, street intersecting at right angle. Example, Lothal. Domestication architecture. The Indus Valley civilization was known for its advanced urban planning and well-structured houses. ठीक है. The houses were made of burnt bricks, baked bricks. Okay. Doors were made of wood. Every house had its own bathroom. Okay. Some anticipate were made between drains to clean up and trap solid waste. Okay. Limestone slabs were used as drain covers. Okay. Many houses had their own private wells. And drainage system of Indus Valley civilization. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है,
Yes. Tracking social differences, studying burials. Some of the graves contain pottery and ornaments as believed that it can be used after life. Jewelries were found in burial of both men and women. Death were buried with copper mirrors. Burials of dogs along with their masters. Not. Ornaments consisting of 3 shell rings, a jasper bead, and 100 of micro beads was found near the skull of a male at Harappa. Coffin burial executed in Harappa. Harappan burials with ornaments and potteries. Urn burial, double joint burial executed from Lothal. Craft production. Chandu Dharo devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making, and weight making. Nageshwar, Gujarat, and Balakot, Pakistan. They were centers for shell making, bangles, slates, and inlay. Ornaments for Indus Valley civilization and Jatayat stone. ट्रेड एंड कॉमर्स नागेश्वर एंड बालाकोट शेयर के लिए, सोरतुगहाई लापिस लाउजली के लिए, साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात कार्नेलियन के लिए, खेतरी एंड ओमान स्टाइट सॉफ्ट स्टोन के लिए, साउथ इंडिया कॉपर एंड गोल्ड के लिए, कोलार कर्नाटका गोल्ड के लिए, कार्नेलियल ऑरेंज स्टोन एंड लापिस लाउजली ब्लू स्टोन. Mesopotamia civilization around Tigris and Euphrates rivers. Harappan seals. Harappan seals were made of apatite, a kind of soft stone. Seals often contained animal motifs and a pictographic script. The seals usually have a line of writing, probably containing the name and title of the owner. The Harappan were not aware about lion. Okay. उसके बाद scripts. The scripts are not in alphabetical order and are pictographic. Most inscriptions are short and the longest script contain about 26 signs. They are written from right to left. Script was known as a Boustrophedon. They were found one jewelry, bone, rod, seal, copper tool, jar, and an ancient signboard. The scripts are undeciphered till date. Weight. Barter system was prominent in Indus Valley civilization. Exchange was regulated by a precise system of weight, usually made of a stone called chert. Sukur and Rohiri Hills limestone and chert blades were mass produced and sent to various Harappan settlements in Sindh. Lower denomination of weights binary, higher denomination of weight decimal. Indus Valley people did not know about iron. Religious practice. They worshipped unusual or unfamiliar objects such as a mother goddess, priest, king, etc. Fire altars were found at Kalibanga and Lothal. Weight used were seen in multiple of 16. The weight were uniform. Okay. Terracotta figure of mother goddess symbolize a tree growing out of a embargo made of clay found at Mohenjo-daro. Priest king made of apatite obtained from Mohenjo-daro, height 17.5 cm, 6.9 inch. The dancing girl statue made of bronze in Tribhanga mudra, height 10.5 meter. Linga Shiva in yogic posture, Pasupati seal, one horned animal unicorn. उसके बाद religious practice, examining seals, unicorn, one horned animal, lingas, conical stone object worshipped as symbol of Shiva, proto Shiva seal, Pasupati. Pottery used, ochre colored pottery, black red ware pottery, patent grey ware pottery. Possible reason for decline of Harappa civilization: first, climate change; second, deforestation; third, excessive floods; fourth, shifting or drying up of rivers; fifth, foreign invasion. Side, river and characteristic feature. Harappa 1921 by Dayaram Sahni in Punjab, Pakistan. River Ravi and characteristic feature 6 granaries in a row. Mohenjo-daro 1922 by R.D. Banerjee in Sindh, Pakistan. River Indus, Great Bath, Great Granary, Proto-Shiva, Dancing Girl statue, Goddess Earth, and Bearded Man. Chandudharo in Sindh, Indus, City Without Citadel. Lothal in Gujarat by S.R. Rao. Bhogwa, Ancient Port, Dockyard, Fire Altar, Double Burial. Kalibanga in Rajasthan, River Ghaggar, Fire Altars, Black Bangles, and Polo Field. Rakhigadi in Haryana, Ghaggar, largest Indus Valley site, terracotta wheel and toys. Dholavira in Kutch area, Gujarat, giant water reservoir city was divided into 3 parts. Banawali in Haryana, barley, lack of grid patterns. Bhirana in Haryana, oldest Indus Valley site. Ropar in Punjab, Satluj, Speed Burial, Sonali extended burial. ये था आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन. हाँ